Hello everyone, how are you all? And I welcome back to you on Finance Buddies. So yes, guys, today I have something to share with you. This topic is something जो मेरे personal life में I have experienced this and I would really like to share this experience with you because मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो हम सब के लिए एट लार्ज ऑडियंस ये हम लोगों के लिए काम आ सकता है. So yes, I would just like to share with you that the topic is smartphone versus smart investing, and as you can see over here, there is one boy over here, या फिर एक अंकल है या फिर कोई भी है. So he's thinking about smart investing and about a smartphone, and he's actually confused that what should I do? What should I do? So I would like to tell you over here, many of you might don't understand what actually I'm going to speak, but let me just get started and let me tell you. Smartphone हम जब भी लेते हैं आजकल, what is the thing that we first think about? यार मेरे फ्रेंड के पास ना वो एप्पल का फोन है. मेरे पास अगर एमआई का फोन होगा तो क्या होगा? It won't look nice, right? स्टेटस अच्छा नहीं लगता है यार. मेरे मेरे पास एटलीस्ट फिर वन प्लस तो होना ही चाहिए, या फिर एटलीस्ट कुछ 20 30 40 हजार वाला फोन तो होना चाहिए. अगर वो 1 लाख का रखता है अपने जेब में तो यार मेरे पास तो कुछ अच्छा वाला फोन होना चाहिए. एंड नाउ दिस सोशल प्रेशर, बड़े लोगों को सोशल प्रेशर आता है तो चलो ठीक है, मान भी सकते हैं, वो पैसा भी कमा रहे हैं, वो एप्पल का फोन ले भी सकते हैं या कोई भी महंगा फोन ले सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक ब्रांड, इट इज एप्पल और इट्स एनीथिंग लाइक दैट, बट यार वो ले भी सकते हैं. लेकिन why this question is coming in front of students those are not even earning right now. They are thinking that कि पापा मुझे फोन चाहिए and I want महंगा फोन मतलब एप्पल, क्योंकि मैं जब मेरे फ्रेंड्स में जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट कि तुम होते कौन हो यार, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? क्या तुम वो पैसा कमा रहे हो? क्या तुम वो पैसा कमा रहे हो? डू यू इवन नो द वैल्यू ऑफ दैट मनी? एक बार पैसा कमा के देखो और तब फिर चाहे तुम्हें जितना खर्चा करना है खुद के पैसों से खर्चा करो. आई एम नॉट सेइंग दैट कि तुम लोगों को 5-10 हजार वाला ही फोन चाहिए या 20 हजार वाला ही चाहिए, 30 हजार. आई एम नो वन टू डिसाइड अबाउट योर फाइनेंसेस. इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू. इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू एंड यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विथ योर मनी. बट एक कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. एंड दिस वॉज one of the questions. It was not one of the questions, but in one of the interviews, जहां पर मैं कंपनी में एक इंटरव्यू देने गया था. एंड वहां पर ऐसा था कि हमें एक टॉपिक पर लिखना था. ठीक है, ऑब्वियसली दैट वाज अ फाइनेंस कंपनी. एंड ये टॉपिक कोई भी टॉपिक पे लिखना था. एंड आई सजेस्टेड अ टॉपिक लाइक स्मार्टफोन वर्सेस स्मार्ट इन्वेस्टिंग. ठीक है, स्मार्टफोन वर्सेस स्मार्ट इन्वेस्टिंग. लेट मी टेल यू ये वाले इंसिडेंट से इतना ज्यादा खुश हो गया था वो इंटरव्यूअर जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे. उन्होंने जब ये पढ़ा जो मैंने लिखा था, he was actually so damn impressed by it. Let me tell you, मतलब कुछ ऐसी देरी ही नहीं थी. He was just about to say that yes, you're absolutely in. ठीक है, you're absolutely in for this. What was that? I have written in that particular page, मैंने क्या लिखा था? If given 1 lakh rupees to me, if given 1 lakh rupees to me, मेरे पास अगर 1 लाख रुपए पैसे आते हैं, so what I'm going to do with that? I am going to, and if given a choice to purchase an Apple phone, I'm not going to purchase an Apple phone, but I would purchase a phone which is well equipped, which is having all the latest technology, all the latest RAM, all the latest storage capacity, and a good processor, a good camera. and शायद मैं कुछ 30,000 का भी फोन अगर खरीदता हूँ, बहुत ही अच्छा वाला फोन 30,000 में आ जाता है with all the latest facilities. I'm not going to compromise on the facilities. And that 70,000 money I am going to invest in stocks, into equity. And that 70,000, कोई भी एक फोन जो होता है वो 1-1.5 साल में थोड़ा सा पुराना हो जाता है. Why? Because the technology changes. फिर उसके बाद
वो रैम इंक्रीज हो जाता है, स्पेस हमें सफिशिएंट नहीं होता है, एंड ऑल द मेजर चेंजेस दैट्स एब्सोल्युटली हैपनिंग ऑलवेज। तो मेरा तो ऐसा रूल है कि यार हर 1.5-2 साल में फोन बदलना है, ठीक है। सो फिर मैंने वहां पर क्या लिखा था कि आई एम गोइंग टू चेंज माई फोन आफ्टर 1.5 और 2 years, 1.5 years लेट्स से, बिकॉज सब टेक्नोलॉजी आएगा, एंड अगेन आई वांट अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी वाला फोन, बिकॉज आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन माई फोन विद द टेक्नोलॉजी, बिकॉज आई एम वेरी टेक सेवी पर्सन, राइट, आई एम वेरी टेक सेवी पर्सन, सारे काम मोबाइल पर ही हो जाते हैं, राइट। So I am going to invest that 70,000 rupees into stocks, and I am going to earn something out of it, let's say 20,000, और उसी 20,000 या 30,000 में मैं फिर से मेरा नया फोन खरीदूंगा, तो मतलब मेरा यहाँ पर पैसा इंटैक्ट रहता है, एंड आई एम गोइंग टू परचेज 2 फोन्स आउट ऑफ इट, और मेरे पास अभी भी पैसा मेरा इंटैक्ट है। And actually the interviewer was totally he was impressed so much. He said that कि यार अगर तुम्हें फ्री में पैसा मिलता है तो डेफिनेटली कोई भी क्या सोचता है, 1 लाख रुपए अगर तुम्हें मिलता है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बाय एन आईफोन, एंड डेफिनेटली आफ्टर 2 years इवन इट इज गोइंग टू बी आउटडेटेड, क्योंकि आईफोन का भी कोई नया वर्जन आने वाला है, तो 1 लाख रुपया गया और फिर से एप्पल का फोन खरीदना है तो फिर से 1 लाख रुपए डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तुमने एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी वाला फोन 2 साल में 2 बार परचेस कर लिया, मतलब 4 साल चलेगा, एक फोन 2 साल, मतलब 4 साल में तुम लोगों ने 2 फोन खरीद लिए, and that's absolutely great, and you have invested that money, and the money is growing for you, and that is what I want to say। सर इसमें लॉजिक क्या था? लॉजिक ये है, I'm not against purchasing the Apple phone, and I'm not against purchasing a महंगा वाला phone। What I want to tell you is you should start doing smart investing, that too as having the different perspectives, different goals। and मैं एक यंग स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि यार तुम लोग इतना महंगा फोन खरीदते हो, और यंग नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट यंग people, right, young people, all the young salaried और जो भी कोई भी है, if you have money and definitely you spend it anyhow, that's not a problem, but अगर स्मार्टफोन पे खर्चा कर रहे हो तो start doing smart investing as well। don't keep your money idle in the bank account। अगर तुम्हारे घर वालों के पास पैसा है तो बिंदास खर्चा करो, स्मार्टफोन क्या, तुम कोई भी फोन लो, 1-1, 2-2 लाख का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट वेदर आई शुड स्पेंड दैट मनी और नॉट ऑन अ महंगा वाला फोन, बट इट्स अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट स्मार्ट इन्वेस्टिंग बेसिकली। और जो भी जिसका तो कैपेसिटी भी नहीं है यार, वो मैंने देखा ईएमआई पे लेते हैं स्मार्टफोन, वो भी एप्पल वाले फोन, ईएमआई। अगर तुम ईएमआई जितने का भरते हो उतने की अगर तुम एसआईपी भी शुरू करोगे ना, तो शायद तुम्हारा पैसा ज्यादा ग्रो होगा। और जो काम एप्पल में हो रहा है वो काम दूसरे फोन में भी हो सकता है। एप्पल इन द सेंस नॉट ओनली एप्पल, इट कैन बी वन प्लस, इट कैन बी एनी अदर महंगा वाला फोन, बट द मेन थिंग ओवर हियर व्हिच आई वांट टू फोकस इज स्टार्ट डूइंग स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इट डजंट मैटर हाउएवर स्मॉल अमाउंट इट इज। स्मार्टफोन लेने के लिए 1,000 रुपए का ईएमआई सोच सकते हो, स्मार्टफोन लेने के लिए 3,000 का भी ईएमआई सोच सकते हो, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए तुमसे एसआईपी करने के लिए तुमसे 1,000 रुपए भी नहीं छूटता है, 500 रुपए भी नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में ही करो। इफ यू डोंट वांट, यू कैन स्टार्ट एन आरडी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। यू कैन स्टार्ट what I can say that fixed monthly in the stock SIP, whatever it is, there are many options। You can start with PPF। सो स्मार्ट इन्वेस्टिंग करने के लिए ये मैटर नहीं करता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, ये मैटर करता है कि तुम कितना जल्दी शुरू कर रहे हो। एंड इफ यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन द लग्जरी, तो तुम्हें फ्यूचर में भी लग्जरी लगने वाला है, तो फ्यूचर में भी तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। एंड इफ यू आर जस्ट कीपिंग योर मनी आइडल एंड योर मनी इज नॉट ग्रोइंग, देन इट्स नॉट ऑफ यूज। आज तो तुम लग्जरी लाइफ जी लोगे, लेकिन कल जाकर शायद expenses इतने बढ़ जाएंगे कि you can't actually survive on the same money that you're having। So it's very important for us to understand that smart investing is equally very important। So the question over here and the debate is not about smartphone महंगा ले या ना ले, it's about smart investing
and we can, it's not only about the stocks, it's about having the different asset allocation. Maybe you can invest in bank FDs, maybe you can invest in recurring deposits, maybe you can invest in bonds, maybe you can invest in saving account, saving नहीं sorry, RDs हो गया, फ्लेक्सी डिपॉजिट्स भी आता है. यू जस्ट गो टू योर बैंक्स एंड आस्क देम अबाउट दैट कि तुम लोग को जब भी निकालना है तुम लोग निकाल सकते हो, वो इमीडिएटली लिक्विड होता है. So if you are ready to take some risk, you can invest in stocks definitely. So this is known as asset allocation, and asset allocation पर भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, because whenever the market is at peak, market जब भी peak पर होता है तब हमें ये सारे चेंजेस करने पड़ते हैं. इफ आई एम इनटू टू मच रिस्की असेट्स, आई हैव टू रीबैलेंस माय पोर्टफोलियो एंड आई हैव टू शफल इट टू द डिफरेंट डिफरेंट व्हाट आई कैन से द डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. एंड अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझता है तो एटलीस्ट गोल्ड तो ले सकते हो, gold, right? 1 gram, right? You can do that. So start investing today, or start your investing plan very soon. And whenever you're earning your first salary, from that one day you have to remember, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझता है, कुछ भी नहीं समझता है, फिर भी तुम रिकरिंग डिपॉजिट तो कर ही सकते हो, 1,000 का, 2,000 का, 500 रुपए का. To make sure that if you're earning and if you're not started saving, this is the biggest mistake that you're making. So पहली इन्वेस्टमेंट पहली सैलरी पे होनी ही चाहिए, पहली इन्वेस्टमेंट पहली सैलरी से होनी चाहिए. इट डजंट मैटर हाउ मच सैलरी यू आर अर्निंग, बट मेक श्योर यू आर स्टार्टेड योर इन्वेस्टमेंट्स. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड मुझे यही तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी. और मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है. यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर दैट Unacademy is providing the scholarship pool of 1 crore, and जहां पर you can attain all the CA foundation students, you can attain this test, that is MCQ test. 50 क्वेश्चंस हो गए, 75 मिनट्स हो गए तुम्हारे पास, और यहाँ पर तुम लोग फ्री में एब्सोल्युटली ये टेस्ट दे सकते हो, फ्री में एनरोल भी कर सकते हो. ये 28 फरवरी को होने वाला है, 12 बजे होने वाला है. You can enroll it for free. Just go on the Unacademy, you just find their Unacademy comeback, and you can just enroll for free by using the code DAGA10, that is DAGA10 is the code, and you can just enroll it for free absolutely. और एक चीज जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, दैट इज अभी तक अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लेना. देखना यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सेशंस है, बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट वीडियोस है जहां पर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो. ऑन स्टॉक्स, राइट, ऑन स्टॉक्स 100 माइनस एज रूल, 30 50 30 20 रूल, रिच डैड पुअर डैड, 3 मनी मिस्टेक, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट स्ट्रेटजी, मन की बात, हाउ टू गेट द allotment, right, IPO allotment, and many more. So if you really like the videos over here, guys, please support me, and let's make this family a big family where I can make more such videos for you, short and informative videos. And also, guys, I will just take one more minute, that if you want to take any of the subscriptions on Unacademy, you can definitely go and use this code DAGA10. You will definitely get the maximum discount, जो भी possible होगा वो discount तुम्हें मिल जाएगा. और intermediate का foundation का already एक batch announce हो चुका है, and you can go there, you can apply this code, and you can just avail your plus subscription absolutely, and this is very reasonable. 12-month subscription is at 15,750, and 24-month subscription is at 18,900, which is really very reasonable. You can go for it, and you can just ensure that you are enrolled for the plus. ये जो डिस्काउंट है, ये फाउंडेशन का डिस्काउंट जो है थोड़ा कम होने वाला है 1 मार्च से. So you can think about it, and if you want to take it fast. You go and rush it and take the subscription very fast, very soon, because फिर ये डिस्काउंट कम हो जाएगा तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. So yes guys, this is all from my side for today, and I hope that this simple rule of smartphone versus smart investing might be helping you thoda sa. And if you really like this, share it and like it. Thank you so much. Happy investing.